हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस सेशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं ना, तो प्रीलिम्स में बहुत डिफरेंट इंडियन इकोनॉमी होती है। जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। उनको कैसे पढ़ना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, उनको हम इस लेक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यूँ तो ये लेक्चर हमारे सीएसएम का पार्ट है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस प्रोग्राम का पार्ट है, और साथ ही साथ प्रारंभ के मेंस सेक्शन में भी ये आपको मिल जाता है। बट स्टिल हमने इस सेक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन एनालिसिस किया है, तो इस लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि ऐसे कुछ और भी वीडियोस आपको चाहिए और ये पूरा प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप video.onlyias.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Hello, all of you. Welcome to OnlyIAS platform. I am Shubham Sharma, your economy faculty. So this is my brief introduction. I am from Jaipur. I had done company secretary and law, and I had experience of 5+ year of teaching to the students of UPSC. So in this particular lectures and these particular videos, we are covering the mains portion of economy, especially in the mention that is mentioned in GS mains paper 3. तो जो GS मेंस पेपर 3 में इकोनॉमी का पोर्शन है, इकोनॉमिक का जो सिलेबस है उसको हम अच्छे से करेंगे। एंड आई होप कि ये जो हमारी जर्नी रहे ये बहुत पॉजिटिव रहे, आप लोग सब सेलेक्ट हुए और हम सब हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करें। तो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट मैं हमेशा यूज करता हूं, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। अपने पे भरोसा रखिए, ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी की टू सक्सेस है कि अपने ऊपर भरोसा रखें। आप जितना आपके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा आप हैं, ये बात समझिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इकोनॉमी को अप्रोच कैसे करना चाहिए, कैसे इकोनॉमी की तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें यह पता हो कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, रादर देन हमें क्या पढ़ना है इससे जरूरी, और क्या इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन दिस इज syllabus. As you all know that the syllabus of UPSC mains is well defined, well crafted, well articulated. So if I'll talk about the prelims exam, the syllabus in economy is not properly mentioned. But when I talk about the main syllabus, it is very much beautifully designed and you know everything that these are the topics that they will ask the questions from. So the very first important thing that your syllabus should be have a proper scan, मतलब आपका जो syllabus है उसका proper scanning, proper image आपके माइंड में स्टोर होनी चाहिए। और ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी आपके चारों जीएस के पेपर्स हैं उसमें ये चीज इंक्लूड होती है। एंड इवन योर ऑप्शनल, ये क्यों एसेंशियल है, व्हाई इट इज सो एसेंशियल दैट यू हैव अ क्लियर रिटेंशन ऑफ सिलेबस? द रीजन बिहाइंड दैट इज whenever you are studying anything, suppose you are studying anything from Hindu or Indian Express or from any other sources, you have clear cut knowledge, okay, this particular topic is included in this particular segment. So if I'll talk about anything, that is whatever I am reading from Hindu or anything, I have a clear understanding, okay, this particular portion will come in this particular note, this particular topic. So this is the important thing, that syllabus should have you have a complete learning of the syllabus. Then the second important thing is previous year papers. See, previous year papers are like a good friends to you. They will help you out to find out ki what type of questions UPSC asked from the previous year segment. So importantly, if I'll talk about the important previous year paper, if we will say the important previous year is from 2013 till 2020. These 7-8 years paper you need to see carefully, like what all kind of questions they have asked in economic segment, especially in paper 3, so that you have a clear knowledge कि UPSC कैसे questions को एग्जाम में पूछती है। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस, ये आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेंस का जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है। if you see the prelim syllabus of economy, it is not properly specified, but in the main syllabus you see that everything is clearly and specifically mentioned. Like infrastructure में अगर वो बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख रखा है एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, तो ये प्रॉपरली डिफाइन कर रखा है सिलेबस में। अब मैं आपसे जब कह रहा था कि आपको सिलेबस याद करना है, सिलेबस ध्यान से देखना है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे यहाँ पर एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, यहाँ पर ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग।
अब आपको पता है कि रिसेंटली दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0। दे अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी हमारा हनी बी कीपिंग बहुत न्यूज में है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये एनिमल रियरिंग के पार्ट में आ सकता है। फूड प्रोसेसिंग में रिसेंटली जैसे मेगा फूड पार्क खुल रहे हैं, मेगा फूड जोन, स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खुल रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक फूड प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें। सिमिलरली अगर मैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करूं, तो वो ग्रोथ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो हमें जब क्लियरली हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेंस में क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंस में कौन से टॉपिक से ये लिंक हो रहा है। इसीलिए आपको सिलेबस की अच्छे से जानकारी, अच्छे से समझ होनी बहुत एसेंशियल है। देन इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी, तो इसमें भी एक बहुत अच्छी कोट है, आई फाइंड दैट हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव। सो आई फील दैट वॉट एवर इफ आई एम डूइंग मोर हार्ड वर्क देन द लक विल ऑलवेज कम टू मी। द ऐसा कहते हैं ना कि लक फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। वो क्यों होता है? ये बहुत बड़ा गलत कहने की बात है कि यूपीएससी सिर्फ लक से हो जाता है या इसमें लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस, लक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वो लक भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जो लोग मेहनत करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इसीलिए कहा गया है कि जब हम मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी हमें जरूर अपने अपने आशीर्वाद से हमें सक्सेस अचीव करवाएगा। तो पहली चीज तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की। वॉट एवर वी आर डूइंग वी मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ओके दिस इज द टॉपिक, दीज ऑल थिंग्स आर देयर, ये सारी हमें प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें प्रॉपर रिविजन करना है। सी, रिविजन इज द की। रिविजन एक वो चीज है जो इस पूरे कोर्स की, जो पूरे यूपीएससी एग्जाम का एक ब्लड है। तो रिविजन के साथ में मैं यहाँ पे री रिविजन लगाऊंगा, री रिविजन लगाऊंगा, फिर एक और री रिविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? द रीजन बिहाइंड इट, क्यों फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है? आपके पास जो 7 डेज हैं उसमें से आप 4 डेज कोई भी नया टॉपिक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2.5 डे सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमारे अंदर ये, जब हम लोग, मैं तैयारी करता था तब भी ये चीज होती थी कि आई ऑलवेज वांट टू स्टडी न्यू, और रिवीजन में लगता था कि यार आई नो एवरीथिंग, क्यों अननेसेसरी रिवीजन करना, टाइम वेस्ट करना। लेकिन ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी तैयारी करें, जिस भी टॉपिक की तैयारी करें, उस पे बेस जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, मेंस के आंसर राइटिंग को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, वो रिवीजन के पार्ट में ही आएगा। तो अपना रिवीजन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, यही रिवीजन आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा भी। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरलाइन की। तो जो भी टॉपिक, वट एवर द टॉपिक यू आर स्टडिंग, आइदर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और फ्रॉम एनी रिलेवेंट बुक्स, ट्राई टू अंडरलाइन देम एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। डोंट थिंक दैट लेट्स अंडरलाइन इट एंड देन वी विल अगेन रीड इट। नो, आपने जो भी अंडरलाइन करा है, जो भी बुक से आपने पढ़ा है, जो भी न्यूज़पेपर से आपने पढ़ा है, कोई मैगजीन से आपने पढ़ा है, उसकी प्रॉपर अंडरलाइनिंग करके उसको नोट्स फॉर्म में लिखिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के लास्ट डे या उससे एक दिन पहले आप वो सारा मटेरियल लेके कमरे में बैठे, आपके रूम में बैठे हैं और फिर आप तैयारी कर रहे हैं एक बुक खोल के। नहीं, आपके पास कंसाइज नोट्स होने चाहिए। क्योंकि लास्ट में, जैसे मैं अगर बात करूं कि मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं पढ़ता था अपने एग्जाम के लिए, तो मेरे पास मेरा एक फोल्डर था, उसमें अराउंड 70-80 पेजेस थे, उसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री थी। तो वो मुझे हमेशा हेल्प करता था हिस्ट्री रिवाइज करने में, 3 दिन 2 दिन 3 दिन में। और जब मैंने अपने नोट्स को खुद ने पढ़ना शुरू किया तो वो आधे टाइम में हो जाता है। तो रादर देन कि एक बुक में अंडरलाइन करके आपने उस बुक को अलग रख रखा है, फिर आप वापस उस बुक को खोल रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन होता है और वो बल्कि मटेरियल हो जाता है बहुत। तो हमेशा जो भी आप पढ़ें उसको नोट करके अपने प्रॉपर नोट्स को अरेंज करके रखें। देन इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली, तो फोकस ऑन बेसिक्स। यूपीएससी अभी भी, चाहे यूपीएससी में क्वेश्चन लेवल कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, कितनी भी चेंजेस हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन यूपीएससी हमेशा बेसिक्स पे फोकस रखती है। इसीलिए आप जो भी चीज पढ़ें उसमें बेसिक्स को लूज मत करिए, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी आपको एक बात बताता हूं, अभी रिसेंटली देयर इज अ टर्म इज वेरी मच फेमस कॉल्ड एज ऑपरेशन ट्विस्ट। अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि करंट के किसी टॉपिक में होती है, लेकिन वो स्टैटिक से लिंक होती है।
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा अभी प्रधानमंत्री कृषि उन्नति योजना है, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वट एवर द टॉपिक यू आर स्टडिंग, try to link it with static and always focus on basics. तो ऑपरेशन ट्विस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अच्छे से पता हो कि what is open market operation. So if suppose they are asking a question like, because of this COVID situation, the country is continuously facing the problem of deterioration in growth. तो deterioration in growth हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि growth क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। ऑल्दो आपने ये प्रीलिम्स में सब पढ़ा है, लेकिन स्टिल आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने जरूरी हैं, तभी आप मेंस में अच्छा आंसर राइट कर पाएंगे। Then relate it with current. Always try to relate everything with current. Whatever you are studying in static portion, try to relate it with current. So if suppose you are studying blue revolution 2.0, so you should know what is blue revolution first. Okay, then you always have a linkage. So proper mind mapping is very important. So proper mind mapping means, if suppose you are studying the relationship between growth, production and employment. So if suppose the thing is like कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस तरह से इस तरह से है कि if demand increases, तो you always have this kind of linkage. Demand increase, production increase, it increases the employment, it increases the investment, it increases the saving. So you always have this kind of linkage. Proper mind mapping should be there. So whenever you are making the proper mind mapping in your mind, you will focus the topic easily and it makes comfortable for you to understand the whole topic. So always relate it with current affairs. Then last is realistic target. This is the most important thing. See, in UPSC, whatever the thing is, you must remain honest with you. If you feel this thing that you need to sleep for 7 hours, you need 1 hour recreation in a whole day, do it. Don't compare yourself with others, what other people are doing. Everyone has a different strata. Some people are like those who study for 16 hours and they feel enjoyable to study for 16 hours and rest of the time they'll sleep. Some people are like me who study for 8-9 hours, they will play for 1 hour and then rest of the time they'll just focus on themselves. So whatever the thing is, that you always have a realistic target. Don't make your target according to what your roommate is doing or what your friend is doing. Always have this thing in, क्योंकि आपको आपसे अच्छे से ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और ये हो सकता है इस पे कई लोगों की ओपिनियन डिफर हो, बट आई ऑलवेज फील दिस थिंग कि इन अ वीक एटलीस्ट 2 to 3 hours किसी पर्टिकुलर डे में, मतलब पूरे वीक में किसी पर्टिकुलर डे में 2 से 3 घंटे अपने रिक्रिएशन के लिए जरूर रखें। आप मूवी देखिए, आप क्या बोलते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। हाँ, मोबाइल पे चैटिंग या मोबाइल पे कोई गेम खेलने से अच्छा है कि आप फिजिकल आउटडोर गेम्स खेलें, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको फ्रेश भी रखेगा। सो रियलिस्टिक टारगेट्स आर वेरी मच एसेंशियल। Then next is how to take notes. So this is again related to your answer writing also, how to take notes, how to make notes effectively. So don't write full sentences. Try to make charts, try to make mind maps, try to make flow charts. So it will help you to memorize the thing and it will also occupy less space. Suppose the question is, what is the problem of unemployment in India? A question is like, problem of unemployment in India. So rather than writing out 10 points, you should make these kind of things. So it will be easy to remember and it will be very much effective to memorize and do proper revision. And even when you are writing your answer in mains, you can make flow charts, you can make diagrams, you can make a proper these kind of clouds also to write your answers. This will first of all, it will take less of the space and with limited words you can explain more things. So notes should always be made properly handy. Notes हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन को देने के लिए नहीं बनाने हैं, हमें नोट्स इसलिए नहीं बनाने कि मेरे अंकल का बच्चा भी उस नोट्स को पढ़ ले, नहीं, ये नोट्स मैं अपने लिए बना रहा हूँ, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी है। ट्राई टू मेक थिंग्स क्लियरली विजिबल। यूपीएससी में राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती अनटिल अनलेस आप क्लियरली लिखें, स्पेसिंग दें प्रॉपर, आराम से गैप छोड़ कर लिखें, डायग्राम्स बनाएं,
तो वो बहुत इंपैक्टफुल डालता है, चाहे आपकी राइटिंग एवरेज ही क्यों ना हो। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन जानता हूं कैसे करना है, तो वो मुझे हेल्प करा था एक्स्ट्रा मार्क्स लेने में। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखें कि स्पेसिंग प्रॉपर रखिए, ट्राई टू मेक एवरीथिंग लुक कम feasible and clear. This is again a important part. Then what are the sources? If I'll talk about the sources for economy, so as you all have qualified the prelims exam as well, so you know what are the basic sources. Still I'm just recapping it, that you can follow any of the newspaper, Hindu or Indian Express, whatever the newspaper you want to follow, you can follow that. Both of the newspaper are very good, but I still have some more attraction towards the Hindu in that sense, like it is more balanced, more spacing, it will take less time to prepare, less time to read in comparison to Hindu, because of good and comfortable words in Indian Express. Still, you can check the editorials of Hindu also. Suppose in a particular day, if the Indian Express is having more of political editorials, then you can read the editorials of the Hindu and our Sumit sir. And our Sumit sir is very well diverse in this field. He is a brand ambassador of this editorial portion. So you can trust totally on him for the editorial perspective also. Then if I'll talk about NCRTs in economics, the NCRT are not that good because they are not covering the whole of the segment. If I talk about the NCRTs of history, geography, they are very well articulated. But the NCRT of economy is not that good because it is it is not covering the economy in a whole sense. But still, yeah, there are two three chapters in the NCRTs which help you to memorize the definition part and which help you to have basic understanding of some words. So I hope you had already read these NCRTs in your prelims exam, so no need to read them again. Try to stick to these class notes of mine, it will help you out to write good answers in mains. Then class notes, as I already told you, monthly magazine, any of the current affairs that is included, although our the OnlyIAS current affairs are very well designed, they are very helpful in covering the every portion of for prelims and mains both. Then apart from that, yes, these are some important thing. Yojana and Kurukshetra are somehow important in this sense. Like there are many topics which are directly mentioned in Yojana and Kurukshetra, and direct questions were asked from them. So you can just there are 12 one magazine available for one particular month. So you can just check whether the topic is there. Suppose a topic is on social security, is very important. Suppose a topic is on energy, it's very important. Self-reliant India. So these are very important things. So you can just check the topic whether it is suited for your preparation or not, whether it is covering the portion of mains or not, and accordingly you can read and make gist out of it, make proper notes out of it of important thing. Usually क्या होता है, योजना और कुरुक्षेत्र जिस टॉपिक पे होती है उसी टॉपिक पे 8-10 राइटर्स जो होते हैं वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स लिखते हैं, तो आपको सबका जरूरी नहीं है रीड करना, एक कॉमन आर्टिकल्स निकालकर उसके नोट्स बना लीजिए, दैट इज वेरी मच सेल्फ सफाइस. If I talk about the next important, that is economic survey, it is again the backbone of economy, very important both for prelims, as prelims तो आपने दिया ही है, तो economic survey the importance you know, and for the mains perspective also the economic survey is very important because direct questions were asked from the particular words. Like in my attempt, when this neem coated urea was very much in news, so direct questions were asked from this neem coated urea. So these kind of things were there which are important in context of sources for economy. So this is the particular GS main syllabus, include everything in that, make proper structuring out of it. Now let's talk about that, whatever the changes are made in the syllabus, what kind of changes are made in the syllabus, what kind of points, how much questions were asked from particular topic. So if I talk about the main syllabus, maximum questions, if you will see, the maximum questions are from growth perspective, because growth is a kind of thing which is every time in news. Like in recent time, Atmanirbhar Bharat, Make in India, national manufacturing policy, all are the part of growth. So maximum questions were from growth. Budget, again, budget means government budgeting, fiscal policy segment, all are the part of this budget component. Public finance is a part of government budgeting. So 25 questions around was asked in 2019. So it's again a very important topic. Then liberalization from 2019, not so much questions were asked on it, although in 2018 15 marks of questions were directly from that. तो ये मार्क्स के बेसिस पे
देन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने क्वेश्चन नहीं थे, लैंड रिफॉर्म पे तो काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. एंड डियर स्टूडेंट्स, नो दिस थिंग दैट इन यूपीएससी cost benefit analysis is most important. This is again a source of success. Cost benefit analysis. There are many topics which are not useful. I'm not saying that from the last 3-4 years these topics are not that much in demand, so spend less time on them, and those topics in which very much huge questions were asked, try to focus on those topics. हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हमें इन टॉपिक्स पे पीएचडी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए. ये एग्जाम आपकी एबिलिटी को जज करने के लिए, ये एग्जाम आपकी पीएचडी को चेक करने के लिए नहीं है. तो अपना ईगो इशू को साइडलाइन करके इस एग्जाम की तैयारी करें. जैसे अभी अगर मैं सिलेबस में बात करूं, तो ये जो टॉपिक है मेजर क्रॉप एंड इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफी 1-2 सालों से. इवन इफ यू सी द प्रीलिम्स पेपर ऑफ 2020, कितने सारे क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर से आए. तो ये 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी सक्सेस में, आपके इकोनॉमी को क्वालिफाई करवाने में. तो इन दोनों चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं अगर मैं बोलूं लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस लैंड रिफॉर्म पे पहले नहीं आए हैं. तो आप लैंड रिफॉर्म की बेसिक रीडिंग करके कि भाई लैंड रिफॉर्म क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट क्या है, लैंड रिफॉर्म को और कैसे बेटर किया जा सकता है, बस इतना ही बहुत रहेगा. लेकिन आपका जो मैक्सिमम फोकस होना चाहिए वो इन 3-4 चैप्टर्स पे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इकोनॉमी में. तो ये जो ऊपर के जो भी मैंने जिन पे टिक मार रखे हैं, ये टॉपिक आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ओवरऑल qualification of exam. So focus on these topics. This will help you a lot in easily qualifying this GS mains paper 3. So this is about the weightage. Now again I'm just saying interlinking of topic is very important. Then this is again most important. There are some topics which are linked together. Like if I'll talk about infrastructure. Infrastructure is a kind of topic which is very important in every sense. It can be asked in economy, it can be asked in geography, okay, it can be asked in essay also, and even the questions can be asked from in interviews also. So this is have a multiply approach. This particular topic have multiplicity use, like it can be asked in economy, it can be asked in geography, it can be asked in essay interview. So this topic automatically became so important. So try to link the topics in such a sense that it have a huge coverage. So this infrastructure topic is again very important. Then try to make questions by your own. Suppose if you are reading anything, I know many of you might thinking कि सर बोर कर रहे हैं. मैं बोर नहीं कर रहा हूँ. यही जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कुछ चीजें हैं, क्रिएट क्वेश्चन बाय योर ओन. सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब 5 मिनट उस आंख बंद करके उस टॉपिक के बारे में सोचिए कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है. अगर आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे, तो ये प्रैक्टिस मैं सच बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस मैंने मेंस के टाइम जब की थी, अराउंड 60% चीजें डायरेक्टली मेरे खुद के द्वारा क्वेश्चंस बनाए गए पे आया था. तो बहुत सा इंस्टीट्यूट आपकी तरफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है. ओनली आईएएस में तो इतने अच्छे लोग हैं कि दे आर ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. बट जो आपका खुद का मेहनत होगा ना, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है. तो क्वेश्चंस को खुद से क्रिएट करिए टॉपिक को पढ़ के, एंड देन last is revision. This is again we have talked a lot on this particular topic. Now let's discuss some of the important issue of regarding to answer writing. See, might be many of you are those who are appearing first time for the mains. जो लोग पहले अपियर कर चुके हैं उन लोगों को तो पता है ये सब चीजें, लेकिन उनके लिए भी रिवीजन में मैं बता देता हूं. और जो लोग फर्स्ट टाइम मेंस अपियर करेंगे उनको तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाट आर द कीवर्ड्स इन क्वेश्चन? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफाइन. If any question was asked regarding to define, so define means you have to precisely write about that particular thing, and then you have to just put the important topic regarding to that. Suppose a question can come in case of define. A simple question can be asked from you, like what is operation twist,
what is Operation Twist, what is Operation Twist, and its impact on on economy, its impact on economy. So you must directly know what is Operation Twist. So they can directly ask you a define kind of thing, like what is Operation Twist. You need to define Operation Twist. Or they can ask you what is crony capitalism. So you have to just define it, what is crony capitalism. Or like they can ask you a question, what is stagflation. So they can directly ask you a question in context of define. So you have to just precisely write about the type, the thing that they have asked, and then just switch to the second part of the question. So this is the meaning of define. Then they can ask you a question about describe. Describe. What is the meaning of this word describe? In this question, in this describe kind of thing, they want that you should write the main points, main characteristics, main features of this particular question. So if they ask you a question like describe the functions of monetary policy committee in the current scenario or in the current scenarios, so you have to just write out the main points, main characteristics, main functions, importance of about the questions they had asked. So whatever they had asked, you just need to tell out the important function characteristics of this particular question. Next come what is discuss. In the discuss part, you have to write initially you have to tell out the what is the they have, what kind of question they have asked. Then you have to go about the some on the favor side. आपको कुछ उसके फेवर में लिखना है, कुछ थोड़ा अगेंस्ट में लिखना है, या फिर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फिर हमें कंक्लूजन पे जाना है. जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, ये देखिए आपसे क्वेश्चन वो इससे इस तरह. अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दे हैव आस्क्ड दैट discuss the contentious issue that have caused the prolonged constitutional logjam in Nepal. You have to debate the issue both for and against and find the reason and examine them. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसके फेवर में लिखिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, और उसके अगेंस्ट में भी लिखिए कि ऐसे क्यों प्रॉब्लम है, क्यों वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल इतना ज्यादा है. एंड देन यू हैव टू टेल द रीजंस एंड नेक्स्टली यू हैव टू एग्जामिन देम. सो इसमें आपको फॉर एंड अगेंस्ट में लिख के आखिरी में अपने आंसर को कंक्लूड करना है कि नेपाल में ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पॉलिटिकल टर्मोइल ज्यादा है. तो फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेपाल इट इज वेरी मच एसेंशियल दैट दे शुड थिंक अबाउट पीपल फर्स्ट रादर देन filling out their pockets for the political causes. So इस तरह से you can have to write the for and against, and in last you have to conclude your answer by properly specify which point you are supporting, what kind of improvement you can expect to be happen. Similarly third point क्या है? Explain. Fourth is explain. In this you have to directly write the proper importance of this thing. You have to write the events in proper sequence, and then you have to, according to a research, according to a particular thing, you have to give the give that research in support of your answer. So explain में question कैसे आ सकता है? जैसे explain में चीज आएगी keeping in mind any what, how and why question, as this will help you to structure a clear and logically coherent approach. So suppose if they'll ask you a question कि recently we have seen that RBI has changed the interest rate because of continuous deflation persist in the economy. Explain. So you have to write out the proper thing why RBI has reduced the interest rate, what are the reasons behind it, how RBI is doing that by reducing the interest rate, and why RBI is doing that. So what, how and why kind of questions, kind of things are included in the explain part. So whatever thing is thing, why, what, how are included in this explain portion. So if suppose RBI has reduced the interest rate because of deflation, why RBI has done this, how RBI can do that, what kind of process RBI can follow. So this is explain kind of questions you can write in that manner. Then the next point is elaborate. Under elaborate, you have to give more detail, provide more information. So elaborate means they can directly ask you a question and then they will say, please elaborate this thing, please elaborate this form. So suppose if they are saying, like in context of economy, if I'll ask, so if I'll say elaborate, they can ask you a question. Recently the government bonds are so much in demand. Elaborate.
So they can ask you a question directly. Elaborate means you have to stretch it, you have to write out the important points, and you have to more specifically mention why this thing is going to happen. Like in this example, if you will see, they are asking you a question. Although individuals within a representative democracy process right, allowing them to lobby parliamentarian and government concerning pertinent issue, a collective approach can offer exert more powerful pressure on decision maker as well as consolidate the range of similar ideas and opinion. Elaborate. So इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आप प्रेशर ग्रुप्स के फेवर में और उनके एग्जाम्पल्स दीजिए और उसको स्पेसिफिकली बताइए कि उस प्रेशर ग्रुप का क्या इंपैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में आपको और डिटेल से और इलैबोरेट फॉर्म में अपने क्वेश्चन का आंसर करना है, आपको एक्सपेंशन करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो दिस इज अगेन अ वेरी ट्रेंडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, इलैबोरेट। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट। तो इलस्ट्रेट से तो यू कैन डायरेक्टली आप समझ गए होंगे। इलस्ट्रेट का मतलब है whenever a question is asking about illustrate, you have to give the examples on that. You have to give examples related to that particular topic, and you can add some stats also. You can add some stats also. So in illustrate thing, suppose they are asking a question. They are asking a question that recently the policy of the fiscal policy that is maintained by the Indian government is somehow not suited for the developing economy. तो आपको फिर इससे कंपेयर करना पड़ेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में कैसा कुछ हो रहा है, और आप एग्जाम्पल भी सस्टेन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, व्हाट इज मेंट बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का कि व्हाट इज मेंट बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये तो हो गया डिफाइन वाली चीज, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये तो डिफाइन का पार्ट आ गया। नेक्स्ट दे आर सेइंग illustrate with example the difference between actual and potential conflict of interest। तो आपको इसमें बताना है कि conflict of interest में actual conflict of interest और potential conflict of interest में क्या difference होता है with example। तो similarly economy में भी आपसे question पूछ सकते हैं कि what is meant by suppose कर लिए पूछ लिया आपसे what is meant by the term stagflation। illustrate with example the difference between stagflation and स्क्यूफ्लेशन। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन क्यों है। तो जैसा अगर मैं बताऊं कि इंडियन इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन क्यों है, ये मनमोहन सिंह ने भी रिसेंटली बोला था कि इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन के दौर से गुजर रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये सिर्फ उन्होंने कहा है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि देयर इज हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, हाई इन्फ्लेशन, लो एम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ एंड हाई इंपोर्ट। तो ये सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन की, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, ग्रोथ कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो। तो ये जैसे क्रूड ऑयल के केस इज द बेस्ट एग्जांपल। क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, उसकी प्राइसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब क्रूड ऑयल कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये जो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां प्रोड्यूस होता है, तो इससे हम लोगों के इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता, तो वी आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। देन वी आर कंटिन्यूअसली इंपोर्टिंग दिस पेट्रोल, so it again create a pressure on our reserves, and that led to the low growth. So this is how they can ask you a question with example. तो example में you can mention about the crude oil kind of thing. So ये मतलब हुआ हमारे illustrate का। Next we'll talk about demonstrate. So demonstrate is again a simple again related to illustration only. You have to give the example, you have to give the evidences, and you have to support your argument through a logic. So इस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आपको बताना है इसमें। then you have to write that why industrialization is a mixed blessing, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सपोर्ट्स हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रोथ हुई, लेकिन ये मिक्स्ड ब्लेसिंग क्यों है, क्योंकि इसने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत परेशान किया, इसने बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इससे बढ़े, इससे हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट हो गई फॉरेन कंट्रीज पे। तो ये इसके डेमोन्स्ट्रेशंस में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एसेस, नेक्स्ट इज एनालाइज, नेक्स्ट इज एनालाइज। एनालाइज में क्या होगा, आपको हर एक पार्ट, एनालाइज में क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को
ब्रेक करना पड़ता है. You have to break that particular question. Then you have to support the on a particular point. You have to support whether you are supporting this or you are whether you have to give support in favor and against. दोनों में आपको support और against देना पड़ता है और फिर आपको ये बताना होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंटररिलेट है. जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पार्ट्स में तोड़ दीजिए, उसको पार्ट्स में तोड़िए, फिर ये बताइए कि आप उसमें कौन कौन सी चीजों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें उसके अगेंस्ट में जा रही हैं और फिर ये दोनों कैसे रिलेटेड है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. ग्लोबलाइजेशन क्रिएट एन एनवायरमेंट इन इंडिया which help in the export but it also create a problem for the domestic economy. तो इसमें क्या हुआ, हम सपोर्ट क्या कर रहे हैं कि इसने हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, लेकिन इसने दूसरी तरफ क्या करा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए परेशानी कर दी. ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से डिजीजेस भी इंडिया में, अभी कोरोना है, कोरोना इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो. सो यू हैव टू सपोर्ट इन फेवर एंड सपोर्ट इन अगेंस्ट एंड देन यू कैन इंटर रिलेट द बोथ द फैक्ट. तो एक क्वेश्चन देखते हैं एनालाइज के ऊपर क्या है. ठीक है, तो एनालाइज के ऊपर ये देखिए, जैसे क्वेश्चन ये रहा, एनालाइज conflict in Indian society are not so much social as they are economic in nature. तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमने क्या बोला, conflict in Indian society are not so much social as they are economic. तो पहले तो हमें इंडियन सोसाइटी में जो conflicts हैं वो सोशल पर्सपेक्टिव से क्यों है, we have to answer that. Now we have to answer in both favor as well as in against. Then conflict in Indian society in context of economic sense क्यों है वो हमें बताना है और फिर दोनों को लिंक करना है कि इंडियन सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है वो सोशल और इकोनॉमिक दोनों वजह से क्यों है, वो हमें एनालाइज करके लिखना है. तो इस तरह से भी आपको एनालाइज का मतलब पता होना चाहिए. Then next term is assess. Assess का मतलब है कि you have to assess the thing, you have to give the judgment. After having a particular know-how, you have to give judgment that what are the strength, what are the weaknesses, what kind of argument are there, what kind of claims are there, and then you have to just stating clearly, you have to clearly mention that what is your opinion in this sense. So if assess के बारे में बात करें तो assess का point आता है, assess the growth and development of technical education during the British rule. So it's a straightforward thing कि what kind of growth and development happened in case of technical education. So British time के दौरान technical education में क्या क्या growth and development हुआ, तो आपको डायरेक्टली ये लिखना है कि ब्रिटिश टाइम पे टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए एंड यू हैव टू डायरेक्टली मेंशन दैट वेदर दीज चेंजेस आर गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी. सो यू हैव अ स्ट्रिक्ट ओपिनियन ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. Next came compare. So compare is a very simple thing. You have to find out the difference, similarity and dissimilarity between the two things and how they are different from each other. So compare, they can simply ask you a question, compare the economic position of India with America. So you have to first find out the similarities and then differences between the both of the economy and then talk about why these differences and similarities are important. So compare the policy of land reform during British rule with current times. This is a simple question. So you have to tell out the policy of land reform that during the British time there are so much of there is zamindari system, mahalwadi system, permanent settlement exists, and in the current scenario land ceiling, land consolidation is there. So you just need to compare them. Tell out the positive in the British time, tell out the positive in Indian context, and then merge the answer in common. Like they'll ask a question like compare. अभी आगे बढ़ते हैं, contrast पे पहले बात करते हैं. Contrast क्या होता है? Next is contrast, similar to compare but concentrate more on dissimilarities. तो compare में तो क्या होता है? Compare में we are talking about similarities and dissimilarities between the topic, but in contrast we are focusing more on dissimilarities. And those dissimilarities are that one which clearly specify that this difference is because of this particular issue. So if I'll talk about like how compare the Indian economic system with the system of America. So here we can directly say that Indian economy is a mixed economy and American economy is a capitalist economy. So this is a particular set of difference we had talked about. So similarly in this question, if they are saying compare and contrast the organizational structure of ISRO and DRDO.
So you have to tell out what is ISRO, what is DRDO. Then ISRO, the main function of ISRO is launch of satellite vehicles, and the main function of DRDO is to make the weapons. So this is the major difference between ISRO and DRDO. So you have to directly mention out what are the dissimilarities between both of the organization. Next came critically examine. Now this is the kind of thing which is mostly asked. This kind of critically examine एक ऐसा टर्म है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये क्यों है. तो critically examine में क्या होता है, firstly you have to whatever the question they have asked, you have to strictly mention कि क्या question में पूछा गया है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है उस टॉपिक के वो आपसे पूछेंगे. फिर आपको बताना है कि ये जो रीजंस हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर द रीजंस एंड व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर नॉट एबल टू अचीव. लाइक सपोज ओपन डिफेकेशन. ओपन डिफेकेशन में आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि ओपन डिफेकेशन से प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. Then you have to tell out why in India the practice of open defecation is more, and then you have to write out what all the problems are there in this open defecation system. So under the critically examine, you have to criticize any particular scenario, what is going on in the current scene. So critically analyze, like a question is there, critically comment on the extent, scope and implication of non-communicable diseases. So first of all you have to write what is non-communicable diseases, then why this non-communicable diseases are creating a problem in India. Like non-communicable disease like cancer is a non-communicable disease, so why this cancer is creating a problem in India, what are the implication of this non-communicable disease, that majority of the people losing their life because of not proper health support. Majority of the Indians are losing their life because they are not aware about their health. Like critically analyze on the scenario of COVID in India. People are reluctant to use the mask. People are not getting vaccinated. So you have to write negative about why this problem is there. What are the reasons of this problem? So critically means you have to give critic. हम कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर मूवी अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिटिक्स ने इसको अच्छी रेट नहीं किया. क्रिटिक्स मतलब जो उस मूवी के अंदर हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि नहीं इस मूवी में, ये मूवी इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इस मूवी में बेस जो था वो अच्छा नहीं था, एक्टिंग जो थी वो तो ठीक थी लेकिन स्टोरी में दम नहीं था. तो क्रिटिकली का मतलब ये होता है. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट इज कमेंट अपॉन. So comment is general basic thing. Comment is you just write your opinion, write out the important points, write out the important evidences when you are discussing any issue. So comment is very simple thing. That comment, there is an urgent need for planning commission to revive the chapter on health in 12th 5-year plan. So you have to just write out the what is the essentiality. Comment is usually used when there is urgency. जब भी अर्जेंसी होती है तब हम कमेंट के बारे में बात करते हैं. जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछें कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग मच ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कमेंट. सो यू हैव टू जस्ट कमेंट आउट कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसकी जरूरत है. तो कमेंट इज अर्जेंट, कमेंट नीड अर्जेंट एक्शन, कमेंट नीड मोर क्विक रिएक्शन, comment need more awareness. So this is the part in which comment can be asked. तो comment में वो सारी चीजें आती हैं जो अर्जेंसी पे हो, जो एक्टिवनेस के बारे में डिनोट करे. तो जैसे अगर हम बात करें कि रिसेंटली द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट मेंटेन्ड इन द इंडियन सिनेरियोज, कमेंट. सो कमेंट मतलब यू हैव टू टेल आउट कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये इस चीज की जरूरत क्यों है, दैट इज कमेंट. नेक्स्ट इज give an account of. Give an account is simple thing. Give an account is that you have to write detailed, right? You have to detailedly mention why this thing need proper description. So if suppose they'll ask you a question, give an account of recent changes in the Atmanirbhar Bharat scheme. You have to give a detailed account of Atmanirbhar Bharat. मतलब आत्मनिर्भर भारत से पूरी इकोनॉमी में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में आपको हर एक चीज देखनी है. तो गिव एन अकाउंट इज totality. When we talk about totality, it is means give an account of. जैसे एक क्वेश्चन आया, to what extent is it correct to say that the first world war was fought essentially for the preservation of balance of power? So इसमें हमेशा बात होती है टोटालिटी की, इसमें हमेशा बात होती है टोटालिटी की. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि give an account of India's export sector performance
from the last 75 years. So you have to write everything in total. That is the meaning of give an account of. इसको हम कहते हैं give an account of. उसके बाद next है हमारा to what extent. To what extent mean how far. If we'll say, like a question can be asked, to what extent you feel that the development of railway sector was done in India? To what extent you can say that the Indian defense sector is still still needs lot of improvement? To what extent we feel that education system in India is not up to the mark? To what extent, how far you can say that, how far we can say that. So this is to what extent. जैसे एक question है इस पे, हाँ, so you need to say to what extent means to what particular scenario. Like a question can be asked, to what extent this make in India scheme will help manufacturing sector to grow. तो आपको ये बताना है कि किस हद तक ये जो चीज है, to how far this make in India scheme will help in manufacturing sector to grow. So this is the meaning of to what extent. Then came critically evaluate. This is the best and this is the maximum time of, again, a kind of question which is asked. Critically evaluate means you have to first of all mention that on these points you are agree with, on these points you are in contradiction. If the question asks about the contradiction, you have to contradict, and then finally you should help in out to reach a particular judgment. Like suppose a question can be asked, the problem of food processing industry in India is a well-known fact. Critically evaluate. Now, first of all, you have to write what is food processing. Then you have to write out what all are the problems that the food sector industries are facing, food processing industries are facing. And then you have to write out how we can correct these problems. So this is called as critically evaluation. Like, the state of Himachal Pradesh and Uttarakhand are reaching the limits of their ecological carrying capacity due to tourism. So first of all, you have to write what are the problems that Himachal and Uttarakhand are facing because of this tourism problem. Then after writing all the problems, you have to find out the ways to solve this problem. That we should promote more of green energy, we should aware the people, we should make a cap that this apart from this limit, not more than this tourist can we go there. Try to launch the environment awareness campaign there. So way to help out this problem. So this is how you can these are the probable type of words, keywords that can be asked in questions. So I hope you will like this particular lecture. You have a clear understanding what kind of questions, how these keywords play an important role. And this is about the orientation session for our mains program. I hope you all like this particular segment, and I'll keep share my experiences whatever I have, and we'll enjoy and we will definitely qualify this exam with the mutual relation of both of you and me. So till then, be healthy, be safe, be protected, and please do take care of your health. Thank you so much.